So yes. So students, last topic that we have done is about acids and bases. Okay, we will just quick revise at what are acids and what are bases. Okay, acids are the substances that are sour in nature. Okay, whereas the bases are bitter to taste. Okay, and acids are strong. Acids are harmful. Okay, they can cause harm to our skin. Okay, and the bases are also harmful. That the strong bases are also harmful to us. So there are some examples that are given on the page number 50. You can see. Do you know the name of the acid and then where it is found? Okay, Vanshika, please read it, bache. The page number 50. Name of the acid is also given and where it is found it is also given. Yes, Vanshika. Name of acid: acetic acid found in vinegar, formic acid found in ants' sting, citric acid found in citrus fruits such as orange, lemon, etc. Lactic acid found in curd, oxalic acid found in spinach, absorbic acid found in amla and citrus fruit, tartaric acid found in turmeric, grapes, unripe mangoes, etc. All the acid mentioned above occur in nature. Yes. Calcium So hydroxide is found in lime water. up to this topic only. आपने सिर्फ acid का read करना था बच्चे. So now next coming to the acids. So there are natural acids also that are called organic acids. Okay, organic acids. Here, and the next are the mineral acids. So students, you can only write the organic acids here. Organic acids. The first one is organic. Then I will tell you the definition. Okay. Organic acids and the other are the mineral acids. Clear? So what are the organic acids? So the table that is given on page number 50, जो acids दिए गए हैं ऊपर blue box में, these are the organic acids. Okay, organic acid means these are found in plants or animals. Clear? जैसे कि ant sting है, उसमें क्या होता है? Formic acid है. So these are the organic acids which are found in the plants and animals. Okay, what are the mineral acids which are found in the earth crust? जो कि earth crust में हमें मिलते हैं. Earth crust. Okay, the acid that is commonly known to you, it is hydrochloric acid. It is the mineral acid. जो टेबल में organic acids दिए गए, that are acetic acid, citric acid, oxalic acid, lactic acid. These are all the organic acids. Mineral acids are which are present in earth crust. Okay, for example, hydrochloric acid and sulfuric acid. There are so many examples, but you should know these two. Hydrochloric acid, जो हमारी stomach में भी present है, and the other is sulfuric acid. Clear? So these are the two types of acids. तो जो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल विनेगर में है तो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. हम विनेगर घर पे भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी स्किन को ज्यादा हार्म नहीं करता है. यार अगर आप यू आर टेकिंग अ टेबल स्पून अगर आपके यहाँ पे लग भी गया तो कुछ नहीं होगा आपको. बट जो मिनरल एसिड है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे. क्लियर? नाउ ये हार्मफुल बहुत है. इट कैन ऑल्सो कॉज बर्न. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बेस. Yes, Krish, read the name of the base and found in where it is found. Krish, read the table. Yes, ma'am. The name of the base and where it is found. Yes, ma'am.
And name of the base: calcium hydroxide found in lime water, ammonium hydroxide found in window cleaner, sodium hydroxide and potassium hydroxide found in soap, magnesium hydroxide found in milk of magnesia. Yes. So the bases are found in these are the substances that are written. These are used in the preparation of soap, window cleaner, and lime water also. Now next is milk of magnesia. आपने commonly सुना होगा. Milk of magnesia जैसे कि हमें acidity हो जाती है. So therefore we use base. Clear? तो इसलिए वो हमारी जो acidity है हमारी स्टमक में वो खत्म हो जाती है. Clear? And then now next there is a question that can I taste all the substances to find their taste? No, we can't taste all the acids or substances. Okay, because it may be harmful for us. Clear? And it will cause harm to our body. So हमें taste नहीं करना है. Clear? इसलिए जो previous activity हमने की थी मैंने आपको कुछ जो chemicals हैं या कोई भी substance है उसको avoid किया था कि आप उसको नहीं taste करोगे. ठीक है? Now next coming to the indicators. Underline the definition of indicators that is given in the starting at the last para of 49 page. It is written in bold. Special type of substances that are used to check whether a substance is acidic or basic are called indicators. Indicators क्या है? ये हम indicate करते हैं. क्या indicate करते हैं कि वो substance क्या है? तो acidic है या basic है? ठीक है, ये हमें बताएगा कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड या बेस. Yeah? So these are the special type of substances which tell us that the substance that we are using is acidic or basic in nature. Clear? So there are some natural indicators also that we can use. Examples are given: turmeric, litmus, China rose petals. These are the some naturally occurring indicators. So we can differentiate it. We can divide it into two categories that are natural indicators. Okay, and the next are the synthetic indicators. Here, what are the natural indicators that are present in the plants? Any type of for example, plants में है, flower में present है. For example, natural indicator के क्या example है? Turmeric powder. पता है आपको turmeric powder? What is turmeric powder? We can use it as yes, Dhruv. Ma'am, it is used in cooking. Yes, हल्दी बोलते हैं जिसको. ठीक है, टर्मरिक पाउडर हम यूज करते हैं. वैसे ये भी क्या है, एज अ नेचुरल इंडिकेटर है. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज लिटमस. ओके, वी विल स्टडी देम वन बाय वन. ओके, नेक्स्ट आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स दैट आर केमिकली प्रिपेयर्ड आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, हमें ये केमिकल लैब में बनाने पड़ते हैं, केमिस्ट्री लैब में. Clear? So these are the synthetic indicators. For example, is methyl orange and phenolphthalein. So these are the synthetic indicators. Clear? इसमें जो है L silent रहेगा, phenolphthalein. Clear? It is EIN, phenolphthalein. L silent है यहाँ पे, phenolphthalein. Methyl orange. ये synthetically prepare किए जाते हैं. Clear है? Organic acids, mineral acids, indicators क्या है? That give us that tell us that the solution is or any substance is acidic or basic. Clear? Next is the natural indicators, synthetic indicators. Natural indicator जो plants में, flowers में present है, that are occurring naturally. Clear? And the synthetic that are prepared chemically in the lab. Now next coming to the page number
50. There is a topic 5.2 natural indicators around us. So we will study about the natural indicators. Here, so the first one is the litmus. Litmus. So we have done in the chapter number 1 also. What is litmus? It is obtained, I will tell you that it is obtained from an organism that is called lichens. Lichens. So can you tell me, Dhruv, what are lichens? Ma'am, which are symbiotic with rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria नहीं था. Yes, Vanshika. Yes. Yes, Vanshika. Excuse me, ma'am. Yes. मैम आपने कहा था कि विनेगर हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो नेचुरल एसिड है. क्या कह रहे हो? मैम आपने कहा था कि विनेगर हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो नेचुरल एसिड है. क्या है? क्या बोले बच्चे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. बच्चे को मैंने टेस्ट इसलिए नहीं करने दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. ठीक है, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं करने को बोला था कि अवॉइड करिए. पता नहीं ना किसी को क्या एलर्जी है या कुछ है, इसलिए सो आई कांट टेल यू दैट यू कैन टेस्ट इट. Here we use it at home, it is not that much harmful, but मैं चाहती हूँ कि please all the students stay safe, so therefore I told you. Clear? बेकिंग सोडा भी नहीं मैंने टेस्ट करने के लिए बोला था, वो कोई बात नहीं. Okay, we use it in preparing food. Here और मेरा कुछ नहीं था. Now the next is litmus. It is so lichens are the organism in which the algae and fungi lives in symbiotic relationship. Okay, where the algae provide the food and the fungi provide the shelter. Okay, so they are living in a, so ये क्या है, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है. इसको हम बोलते हैं symbiotic relationship. Clear? आप अंडरलाइन कर सकते हो. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. Okay, from where it is extracted? It is extracted from the lichens. Here, so it has a purple color in distilled water. So the water, it is a water that is obtained from a certain process. Okay, that you will study in the further class. Distilled water क्या है? Pure water होता है. Okay, more information you will get in the further classes. उसको बोलते हैं distilled water. उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं distilled water. Here, when added to an acidic solution, it turns red to acidic. तो जो ये लिटमस है, it indicates that which substance is acidic and which solution is basic. Clear? If the substance is acid, then what will happen? The blue litmus paper will change from blue to red. Here, and if the substance
पेपर है, दो कलर्स में आता है, ठीक है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू टू रेड हो जाएगा। अगर वो सोल्यूशन जो है बेसिक है फिर क्या होगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। ये दो कलर्स में आता है लिटमस पेपर, आई विल शो यू। So these are the two colors. Okay, it is bluish one and it is the red one. Clear? दो litmus paper, दो colors हैं, red and blue. Clear? जो acidic solution होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये blue color का जो है वो red हो जाएगा। Clear? और जो basic होगा उसमें जो ये red वाला है ये blue color में change हो जाएगा। Clear? It is clear to you all? Now, it is in the form of stripe. पेपर की stripes हैं ये, clear? And it is obtained from the lichens. These are available in the solution form also. Two forms है, one first one is a paper and then second one is the solution. Clear? So you can see in the figure 5.1 also lichens are the structure of lichens is also given, and in the B red and blue litmus paper are given. Clear? Now coming to the activity 5.1, mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Then we will put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Then we will actually in this activity we will observe so many other solutions also. Here that are given: tap water, detergent solution, soap solution, common salt solution, sugar solution, vinegar and baking soda solution. So we will do this activity and record our observation in the table 5.2. So let's start with the activity. Yes. So students, firstly, this one is the milk of magnesia. Okay, and the next is detergent solution, and it is vinegar, lemon juice, and the next is sugar solution, and it is salt solution. Here, so I will take a strip of, I am taking the strip of red litmus paper. Here. So in the case of milk of magnesia, we will see what will happen. Okay, now you can see its color change from red to blue. So it is the acid or base? Acid. Acid. The substance which gives Acid. us, listen to me. Substance, Base. yes, very good. It is base because the color changes into blue color. See clearly. So it is the base. Okay, ma'am. Yes, एक्सक्यूज मी मैम। yes. मैम अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर पर आपने बेस का कोई सोल्यूशन डाला तो वो ब्लू कलर होगा, तो पता कैसे चलेगा? There is no change in the blue. अगर यही इसी को blue के साथ करूँगी, there will be no change. फिर मैम अगर मैं न्यूट्रल सोल्यूशन इसको मैं रेड के साथ करूंगी तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, बेस। रेड जो है चेंज हो जाएगा ब्लू में, तो वी विल नो दैट इट इज बेसिक। अगर मैं इसी को ब्लू के साथ करूंगी, ब्लू तो ब्लू रहेगा, ठीक है। मैम जैसे लिखा है सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। वी आर कमिंग टू दैट। ओके बट देखो ना, इसमें उसमें क्या लिखा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों का नहीं करेगा, ना रेड का करेगा ना ब्लू का करेगा। पर इसमें रेड का इसने किया ना, तो ये ब्लू का तो नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, बेसिक है। जो दोनों में नहीं करेगा उसको न्यूट्रल बोलते हैं। समझ लग गया? इसने रेड को तो ब्लू में चेंज कर दिया ना।
तो हम Yes, इसको ma'am. न्यूट्रल, इसको हम बेसिक बोल लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. समझ लग गया? जो दोनों में Yes, नहीं ma'am. करेगा दैट इज न्यूट्रल। एक में अगर चेंज आ रहा है वो एसिड होगा या बेस होगा, अगर दोनों में नहीं आ रहा तो वो न्यूट्रल होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिटर्जेंट सॉल्यूशन। So you can observe the change. इस कलर का था जो you can see red and blue color. You can differentiate it. मैम यस ब्लू So कलर it में हो is- गया चेंज। Yes, So it ma'am. is Basic. it is Basic. basic. Very good. बेसिक You can see मैंने कैसे यूज किया था, ऊपर वाला जो रेड रेड दिखाई देता है, नीचे वाला बिल्कुल ब्लू। So the detergent solution also contains base. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. अगर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक हो और फिर अगर हम रेड पेपर को करें तो उसका कलर किस पे चेंज होगा? इसका अगर क्या No करें, पहले क्या change. करना है आपने? पहले No मैम change. अगर जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो और अगर हम रेड लिटमस पेपर को यूज करें तो उसका कलर रेड ही रहेगा। हाँ जी रेडी रहेगा। So now next is I am taking the blue litmus paper and the next solution is the vinegar. Here vinegar. So we will check. Here as you can see a light change that has come. Red है but थोड़ा light है Ma'am, base. because vinegar is not that much acid. एसिडिक Red litmus paper का थोड़ा सा change आया है, so that means it is not that much strong acid, ज़्यादा strong नहीं है। Yeah? Ma'am, So next. so it is a base. हाँ जी Ma'am, it is a base. वो एसिड है ना? हाँ जी बिल्कुल, obviously there is a slight change from the blue to red. It might be not clear, but जो blue litmus paper लिया था हमने वो red color में थोड़ा सा change हो गया है। Ma'am, फिर ये base होगा कि acid? Acid हुआ बच्चे, देखिए बेसिक क्या करेगा, ब्लू कलर में चेंज करेगा, एसिड जो है रेड कलर में चेंज करेगा, बस इतना याद रखो। बेसिक बी मतलब रेड को क्या करेगा, ब्लू में चेंज, बी। क्लियर? शॉर्टकट। बेसिक रेड टू ब्लू, एसिड ब्लू टू रेड। क्लियर? द नेक्स्ट इज द lime water or lemon juice. I am taking blue litmus paper. It is blue in color. You can see the change now. थोड़ा सा देखो, ऊपर ब्लू है, थोड़ा सा नीचे क्या है, रेड हो गया। रेड है। हाँ, so it is acidic in nature. Acid. Ma'am, acid. So we have confirmed that the milk of magnesia, these and the detergent solution are the basic ones. Okay, and the vinegar and the lemon juice also contains the acids. Clear? It is clear to you all? Yes. Now next. Ma'am, एक बारी acidic. Ma'am, एक बारी acidic और base के बीच में difference समझा दो. Acidic and base. Firstly, we will complete this activity. Then we will come to the acid and base. Clear? Okay, ma'am. ये activity हम पूरी खत्म कर लें, ठीक है? Then we will. So the next is sugar solution. Sugar solution. I am doing it with red also. I will do it with blue also. So the first is the that one I am using. So कोई चीज आया इसमें, ऑब्जर्व इट केयरफुली। ब्लू चेक No, कलर ma'am. में No, मैम, it is red. No, ma'am. का सॉल्यूशन का। Now blue one. There is any change? Differentiate करवा रहे हो? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, so those substances which don't, the solution which do not show any color change, not in the red litmus paper, not in the blue, that are the neutral. These are the neutral ones. Okay? Sugar solution क्या है? Neutral है, ना इसमें acid है, ना इसमें base है. Clear?
Now next coming to the salt solution. मैंने common salt use किया है. That is available at your home also. So these are the things that are easily available at your home, but you don't have the litmus paper. मैम पहले आप कौन सा लिटमस पेपर लिया है अब आपने? Yes. अब आपने कौन सा लिटमस पेपर लिया है? Yes, it is salt solution. No, ma'am, paper red color का No लिया है. change in the color. You can see. मैम पेपर रेड है कि ब्लू है? It is the red one. मैम नो चेंज. No change. जो salt solution है नो चेंज. जो salt solution है और sugar solution है ये neutral है दोनों ही. ये ना ही red को change करेंगे ना ही blue को करेंगे. Clear? So can you tell me what are the basic ones which change? Dash litmus color to dash. Fill in the blanks. रेड टू ब्लू. Oh. And Red what to are the blue. asterisks which change the color of litmus paper from? blue to red. Changes into Blue to red. So in the neutral, there is no change in the red and litmus and the blue litmus paper. Clear? Yes, ma'am. Okay. Similarly, water is also neutral. Okay, it does not change the color of blue litmus and red litmus. Clear? Water, sugar solution, salt solution, these are the neutral.